Hello everyone and welcome to Turning Point Language Institute. My name is Tarun and today I'm in front of you with a topic of task 2. Guys, this is a debatable topic. We have discussed the format of the topic, but today the main motive of my class is that you can get some ideas about this topic. We are taking a topic of culture, like the people when they migrate from one country to the other, should they change their culture also or not? Guys, ये बहुत ही important topic है. It is not only from the writing point of view. They can ask you the same thing in English also. या फिर वैसे भी गाइस कोई भी conversation होती है तो जो cultural shock है, the people who are living in India are following the Indian culture and suddenly one day they go to a place where the culture followed is absolutely different, so that is called a cultural shock. So we can get a lot of information about that from this session. So guys, the topic today is that some people say that a person migrating to a different country should adopt the culture of the new country, while others say that it should not be done. Discuss both the views and give your opinion. Okay. So sir, आप क्या कहते हैं कि जब एक आदमी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है तो should he change his culture or not? No, I think he should stick with his own culture. He should stick with his own culture. So why, if I ask you this way, that what is the benefit of adopting a new culture? Guys, the biggest benefit is that a person will be able to get a white collared job, and at the same time he will be able to build relationships with the residents of the new country. देखो गाइस, मैन इज अ सोशल एनिमल. जहां पर भी जाता है वो he tends to build up relationships, he tends to make friends in the new country. So if you do not know the culture of the new country, then you will not be able to build relationships. गाइस, एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है. इंडिया में हम कहते हैं अतिथि देवो भव, कि अगर हमारे घर कोई गेस्ट आ गया है तो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है. हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे घर सरप्राइजिंगली आ जाएं, कभी भी आ जाएं तो हमें भी मजा आएगा, हमें भी एक प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा. बट वेस्टर्न कल्चर में दे डू नॉट वांट एनीवन टू कम टू देयर प्लेस बिफोर कॉलिंग अप. सो देयर आर अ लॉट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस. सो इफ the person he adapts the culture of the new country, first of all he will be able to get a respectable job, and secondly he will be able to build relationships with the people of that country. He will not feel lonely. अगर वो वहाँ का कल्चर अडॉप्ट नहीं करता तो जिस टाइम तो दिवाली होगी, सब लोग अपनी रजाइयों में सोए हुए होंगे और आप वहाँ पर बम पटाखे चला रहे होंगे. पर जब क्रिसमस आएगा तो सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होंगे, आप रजाइयों में बैठ के सो रहे होंगे. सो इट इज नेसेसरी टू अडैप्ट द कल्चर ऑफ द न्यू कंट्री. ओके, सो नाउ गाइस, कमिंग ऑन टू व्हाट यू कैन राइट, कमिंग ऑन टू आइल्स. गाइस, जब भी हम जॉब्स के बारे में सोचते हैं, सो आई वांट यू टू नो वन थिंग, that there are two type of jobs. One is a customer facing role, second is a laborious job. Guys, customer facing role वो होता है जिसमें जो worker है he is facing the customers. For example, he is working in a bank or he is working in an organization as a salesman. So these are not laborious jobs. लेबर नहीं करनी होती, मगर आपको कस्टमर्स के साथ बात करनी होती है. So till the time you do not
adopt the culture of the new country, how you will be able to talk to the customers. So, a person who is well versed with the culture will be able to get a customer facing role, but the one who does not know the culture, he will have no other option but for doing a laborious job. So ये चीज हम बॉडी पैराग्राफ 1 में एक्सप्लेन कर देंगे, एंड देन वी विल गिव अ सर्वे दैट 70% successful migrants in Canada are the ones who adopted the culture of the new country. That is why I firmly believe that it is necessary to be well versed with the culture of the host country. ये हो गया हमारा बॉडी पैराग्राफ 1. Now we will say that some people have a different point of view. बॉडी पैराग्राफ 2 में हम कहेंगे कि कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है. They don't want to adopt the culture of the new country. So guys, हम ये सोचेंगे कि जो लोग कल्चर नहीं अडॉप्ट करते वो ऐसा क्यों नहीं करते. वो ऐसा इसलिए नहीं करते बिकॉज they don't want to get disconnected from their roots, from their indigenous culture. उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया तो जो हमारे बच्चे हैं वो तो अपनी आइडेंटिटी को ही भूल जाएंगे. क्या बोलते हो सर? आइडेंटिटी को ही भूल जाएंगे. सो दैट इज अ लॉस टू द प्रीवियस कल्चर. और गाइस दूसरा मेन चीज क्या है कि जो कल्चर है वो एक ही रात में तो हम सीख नहीं सकते. ऐसा तो है नहीं कि मेरे दिमाग में एक स्विच लगा हुआ है, उसको मैंने ऑफ किया तो मैं इंडियन कल्चर का बन गया, उसको मैंने ऑन किया तो मैं कैनेडियन कल्चर का या अमेरिकन कल्चर का बन गया. और इट डजंट हैपन ओवरनाइट. वन फाइन डे यू स्लीप एट नाइट एंड द नेक्स्ट डे व्हेन यू वेक अप यू वर एन अमेरिकन. ऐसा थोड़ी होगा. So the transition of adopting the culture is a very gradual process. आदमी धीरे धीरे कल्चर अडॉप्ट करता है, और अगर वो उस प्रोसेस को तेज करेगा तो he will lose the balance of his life. गाइस आपने देखा होगा आपके कुछ रिश्तेदार जब वापस आते हैं कनाडा से तो वो बोलते हैं कि जी हमने तो पूरी तरह से कनेडियन कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, हमने अपने बच्चों को पूरी छूट दे दी है. पर जब उनके बच्चे रात को दारू पी के घर आते हैं और उनका बेटा बोलता है जी ये देखो मम्मा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं अपने पास अपने साथ लेकर आया हूँ उसको रात को, फिर वो चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो क्या हुआ कि ना तो वो कम्प्लीटली इंडियन रहे और ना वो कम्प्लीटली अमेरिकन या कनेडियन बन पाए. सो द बैलेंस will be lost and it is as good as stepping into boats. तो ये चीज हम बॉडी पैराग्राफ 2 में एक्सप्लेन कर देंगे, and then we will criticize it that it is not a good enough reason to ignore the advantages of adopting a new culture. ये कह के हम बॉडी पैराग्राफ 2 बंद कर देंगे. सो एट द एंड वी विल से दैट इट इज नेसेसरी टू बी वेल वर्स्ड विद द कल्चर in order to get employed at a good place, but at the same time a person should be wise enough to make sure that he is not disconnected from his roots. Guys, if you like this video, please make sure that you subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get the notifications of my new videos. If you have any question regarding this particular video, please make sure that you write your question in the comment box and I will follow it up. Or you can get in touch with me at my phone number, that is 7814428104. I use my WhatsApp on the same number. You can drop me a message as well. Thank you.